बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर की तैयारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आपके साथ मिलकर ये तैयारी मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कर रहा हूं। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो क्लासिकल पोइट्री है। आज हम क्लासिकल पोइट्री के एमसीक्यूज़ जो हैं वो करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ जो है वो करवाए थे। तो चलें क्लासिकल पोइट्री के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हु कॉल्ड चॉसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? स्पेंसर, आर्नल्ड, सिडने, नन ऑफ दीज। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उसे कहा था। ये जनरल तासुर है जो लिया जाता है। हु इज़ लोवेस टेकिंग अबाउट इन द फॉलोइंग लाइन? ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा पोइट है जिसने इंग्लिश को एज ए बोली लिया, एक बोली, आम बोली इलाकाई ज़ुबान के तौर पर लिया और इसे एक बड़ी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान बना दिया? चॉसर, शेक्सपियर, मिल्टन, टी.एस. एलियट। जी, तो जैसे आप सबकी राय है वैसे ही मेरी है और वैसे ही ट्रू आंसर है, और आंसर है चॉसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कॉपलेट इन इंग्लिश? नंबर 1 पॉप, नंबर 2 स्पेंसर, 3 चॉसर, नन ऑफ दीज। जी, कौन सा? हाँ जी जनाब, चॉसर ही है जिसने हीरोइक कपलेट जो है इंट्रोड्यूस करवाई। लॉन्ग कॉल्ड प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मलेसनेस। नंबर 2 नैरेटिव यूनिटी, लैक ऑफ पोएटिक क्वालिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो है नैरेटिव यूनिटी। पांचवा जो एमसीक्यूज़ है वो है, हु वाज द पोएट दैट लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडवर्ड सेकेंड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ? तो नंबर 1 है स्पेंसर, लवलेस, शेक्सपियर, नन ऑफ दीज। तो जो एमसीक्यूज़ 1 है, ए है स्पेंसर, ये है एडमंड स्पेंसर जो है, ये इसका ट्रू आंसर है। द डायलेक्ट दैट चॉसर यूज्ड वाज नॉर्दर्न डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो चॉसर की जो ज़ुबान थी जो कि लंदन की ज़ुबान समझी जाती है, लंदन की डायलेक्ट समझी जाती है, वो थी ईस्ट मिडलैंड। बी इसका ट्रू आंसर है। टुवर्ड द क्लोज ऑफ विच सेंचुरी डिड इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट एंड इन कोर्ट ऑफ लॉ? 10th, 11th, 12th, 14? 14 is true answer. Who would be called the English Homer and father of English poetry? Bede, Sir Thomas मेलोरे, जोफ्रे चॉसर, कैडमन। जी, क्या जहन में आ रहा है आपके? जी, जैसा कि आपके जहन में आ रहा है ये वैसा ही मेरे आ रहा है, और ट्रू आंसर है जोफ्रे चॉसर। विच 12th century poet or poet were indebted to Britain storytellers for their narratives? जोफ्रे चॉसर, मैरी डी फ्रांस, शेरटन डी ट्रोइस, बी एंड सी ओनली। तो इसका ट्रू आंसर है बी एंड सी ओनली, मैरी डी फ्रांस और शेरटन डी ट्रोइस। हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? ये पहले भी आ चुका है, इसका ट्रू आंसर है जोफ्रे चॉसर। In Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty of blood vengeance? Banishment to Asia, everlasting shame, conversion to Christianity, mild melancholia? तो ट्रू आंसर इज
everlasting shame. Christian writers like the Beowulf poet looked back on their pagan ancestors with number 1 nostalgia and ill-concealed envy, bewilderment and visceral loathing. नंबर सी एडमिरेशन एंड एलर्जिक सिंपैथी, और नंबर 4 जो है डी जो है बाइगोटरी एंड शैलो ट्रियम्फलिज्म। तो ट्रू आंसर इसका जो है वो है एडमिरेशन एंड एलर्जिक सिंपैथी। जो इसका सी है ऑप्शन वो ठीक है। पॉपुलर इंग्लिश एडाप्टेशन ऑफ रोमांसेस appealed primarily to the royal family and upper orders of the nobility, the lower orders of the nobility, agricultural laborers, the clergy. The true answer is the lower orders of the nobility. What is the climax of Geoffrey of Monmouth, the history of the King of Britain, the reign of King Arthur, the coronation of Henry II, King John's seal of the Magna Carta, the marriage of Henry II to Eleanor of Aquitaine? True answer, the reign of King Arthur. 15. In addition to Geoffrey Chaucer and William Langland, the flowering of Middle English literature is evident in the work of which of the following writer? Geoffrey Monmouth, the Gawain poets, the Beowulf poets, Sheraton de Troyes. The true answer is the Gawain poets. Who is the author of Piers Plowman, Sir Thomas Malory, Margaret Kempe, Geoffrey Chaucer, William Langland? The true answer is that William Langland is the author of Piers Plowman. This was the most prominent medieval work. Which of the following authors is considered a devotee to chivalry, as it is personified in Sir Lancelot? Julian of Norwich, Margaret Kempe, William Langland, Sir Thomas Malory? True answer is Sir Thomas Malory. The decision of which writer to emulate French and Italian poetry in his own vernacular prompted a change in the status of English? Margaret Kempe, Sir Thomas Malory, Geoffrey Chaucer, William Langland? True answer is Geoffrey Chaucer. What was Geoffrey Chaucer's final work? Complaints to his purse, Troilus and Cressida, the Canterbury Tales. The Canterbury Tale is the true answer. Which of the following 16th century poets was not a courtier? George Puttenham, Philip Sidney, Walter Raleigh? George Puttenham is the true answer. What is blank verse? Iambic pentameter, rhyming couplet, the verse from the Shakespearean sonnet, free verse without rhyme or regular meter, unrhymed iambic pentameter? So unrhymed iambic pentameter is the true answer. Which of the following might be addressed represented by pastoral poetry? An exaltation of city life over the boring country life, shepherd and shepherdess who fall in love and engage in singing contests, a celebration of the humility, contentment and simplicity of living. B and C is the true answer of this MCQ number 22. 23. Which was not among the U genre promoted by a few poets such as Johnson, John Donne and Herbert? Admiration and elegiac sympathy, bigotry and shallow triumphalism. The Petrarchan sonnet, the classical satire,
The Petrarchan sonnet is the true answer. What is the apt title of John Skelton's poem about court life? Abstinence of emotion, benediction, courtly life, dread. True answer is dread. By what name did Elizabethans refer to the rhetorical scheme used in all forms of literature? Number 1, figure. Number 2, overreaches. Number 3, images. Number 4, pori. True answer is figures. Which of the following could be found in heroic poetry? The glorification of nation or people, exotic adventures and marvels, an imitation of Homer and Virgil in structure and motive. All of these. True answer is all of the above. Which poem testifies to the profound doubts and uncertainties attending Dunn's conversion from Catholicism to Protestantism? Air and Angels, Satire 3, The Apparition, The Indifferent. True answer is Satire 3. What was the general subject of the Welsh poet Catherine Phillips' work? Celebration of the transience of all life and beauty. True answer is celebration of female friendship in Platonic term.